क्या होता है जब आप सुबह से ही डिफेंसिव बैठे होते हैं डिफेंसिव ही रहता मैं अगर डिफेंस में था जो मैंने पढ़ा से यूज कर मैं बिल्कुल डिफेंस में था Well, How are you? I'm good. How are you? Amplify. Gigi, How are you? good. Very nice. Yesterday I was following you from home, Okay. and so I'm trying to do the mid trend. Mid-band trend. Mid-band. Okay. I think I'm having issue with when to enter. Okay. No problem. So, and the reason behind that is because you know the rule that both trends like both have to be red and both have to be Correct. green. I'm finding half of the things I'm missing because that's in red. That's okay. So until you have a full setup, there's no trade. Okay, but then I'm not getting when to enter it. Okay, sure. Like today, right now, let's open it up and see. Now you can not sell anything. I'll tell you. Sure, no problem. I'll guide you when is the good entry today. Because and then the one I did, I think I made a mistake, but I think it could be. I'm not going from the low. We'll figure it out. Okay. All right, so. All right, let's do this one more time.
Do camera checks, camera 1, cam 2, cam 3, cam 4. All right, good morning, everybody. Thursday, February 20th, 9 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us from superareas.com. So hopefully we'll be disciplined today in terms of trading. Yesterday, we all waited till 2 p.m. to do the trade for ES. Let's take a look at where did Nasdaq go last night. Last night, the evening session, we have a high of 22,235. 22,235. We have the low of 22,141. 22,141. So the difference between highs and low for the last night, Nasdaq has been 94 points. Now, right now, the price is 206. So it is opening very close to R1. So because 100 is your S1. Let's see ES. ES, we have highs of 59 and low of 41. So the 59, I'm doing it from the whole 6 p.m. thing, just in case if that works. So value areas we have today for this, we have the 53 to 33, so 20 points value area. So let's see if it hits 53 would be your first resistance. If it's going, if its base is up, right now, what is it? Base is down, pressure is down. So let's see how today, uh, first things first, of course, we want to see if there were any news. And yes, unemployment claims were there at 8:30. So more people lost jobs this particular time around. So they were expecting 215,000 people will lose jobs in US for this time, at this period, but 219,000 and manufacturer index is kind of slightly lower than forecasted. So now, what is happening today? We don't have much news until in the evening, 7 p.m., when President Trump is going to speak. So we'll see how it goes. We will see how it goes. But again, the areas came yesterday at 2:30. Beautiful areas. We all took the areas, and I'm pretty happy that it worked out. Good morning, जी क्या हाल चाल है जी? हैं? मैच लगा दे मैच अभी लगा No, I'll get you the match. अब जो कहेंगे हो जाएगा जी. Hello. Okay. Let's get my mics in order. Testing. असल में ना हम एक मैच हार चुके हैं ना तो दिल नहीं कर लगा देते हैं जी लगा देते हैं मैच भी लगा देते हैं. All right, so अगर करना चाहें तो नहीं ये तो वेबसाइट पे वेबसाइट की ट्रेडोवेट की वेबसाइट पे खोल के रखें आप. क्रिकेट हाँ जी बिल्कुल जी. इमरजेंसी एग्जिट है जो आपको कल यूजर नेम पासवर्ड नहीं सेव करके दिया वो ट्रेडोवेट की
रिचुअल बना दें, पहले ट्रेडोवेट खुले, बाद में जाके निंजा खुले। बेशक आ रहा है, सिमुलेशन में कर रहे हैं। हाँ, तो क्लिक करें, तो ये आपकी विंडो ऑल द वे खुली होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा स्कोर नहीं है, बॉल कहते हैं हर बॉल पे 1 रन हो गया तो आप लोग जीत जाओगे। Just fix this. Okay, let me bridge Daniel's mic along with this. Okay. Good morning. Okay. So let me quickly write the numbers for Nasdaq one more time. So किसी ने कल एरिया मिस तो नहीं किया ना? 62 चीख चीख के बोल के गया था मैं कि यार 62 नहीं छोड़िएगा, 62 ना छोड़िएगा, हर चीज कर लें, 62 ना छोड़िएगा। जब यहाँ से जा रहा था मैं कहा 62, बल्कि सुबह भी उन्होंने क्या दिया था, 62 से 10 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 62 है सर। 2:20 पे हिट हो गया था, मैं यहाँ से निकल रहा था ऑर्डर लगा के 62 पे R1 पे, तो पूरे दिन हमने वेट किया और 62 पे ट्रेड ले ली। चले इट्स ओके। वो लेकिन वो रेंज आ गई थी ना उसके R1 के, पहली दफा उसने सिर्फ एक टिक से रह गया था। अच्छा, फिर मैंने कहा दूसरी अटेम्प्ट में लूंगा, तो एरिया आ गया, राइट। सो Nasdaq NQ मैं पर डीएम में 2 डाले, मैंने कहा देखा जाएगा जी, इट्स ओके। तो 2 फुल। So Nasdaq night session high has been 22,235. 22,235. Night session low 22,140. Oops, at that. All right. Why is my board crooked? No value areas. I don't work with value areas. So where's the price of Nasdaq? 213. So this one is close to night session high. So all right, we will go. Any entry for FTMO? Give me a second. Let me get your FTMO going first. So आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, वो बोला, क्योंकि आपने यस करना है, आपने Nasdaq एक्सपीरियंस के साथ होगा। नो, so Nasdaq night highs, lows, value areas, everything is important for you. Let me analyze your
And bit of a milestone, I have completed my, out of 5, my first take profit into the daily payout zone. So I did my EA 1500, I did my PA 1500. Now anything I make every day by 5 p.m. I can request it. I can show you guys how it's very easy. So it just now the dashboard changes. Dashboard says, so I'm now at $1,504. It says, do you want to take the $4? What I'm trying to say is 5 accounts if you have, and if you add $50, just $50, that's 250 US dollars every night. The day you trade, it's like, हम पाकिस्तान में इसको कहते हैं दाढ़ी लगाना. जिस दिन काम आया, जिस दिन एरिया आया, कोई ऐसा नहीं करना कि मैंने अब aggressive trading करनी है. No, I have 5 accounts, right? Sorry, different 5. I have the same category. So let's quickly show you guys take profit. If I log in, so right here, so you see it says first I passed the 5 tests, right? So I passed the 25,000 ones. So that cost me $75 each. So 5 मैंने पास कर लिए कॉपियर से, ठीक है. कॉपियर से वो आगे चले गए 5 प्रो स्टेटस में, ठीक है. अब 1 2 3 4 5 जो मेरा ख्याल है ये वाला अकाउंट है ना 566 वाला. Now you will see another option in there. It's called ability to withdraw. You see, available to withdraw is for, now I can just hit withdraw and there's an option down here to withdraw. So the idea is I can just take any amount above $1,500 and just withdraw daily. I think they want you to make about $100 because there's some fees, but this is one of those things that you work on it. And this took me, I bought it in front of you guys. I think the first one I bought the EA maybe a month ago. So 1 month ago, I took the trade, the one account. And if you look at my history, log in, it is not crazy. It's not, I made 500 in one day, 150, 200, 150, 200. And sorry, so this is the reason I do these exercises along with you guys, just to kind of show you. So so the past is that it is very much doable. So this is my progress. If you look at my first trade, I put it in on January 14th, right? So January 14th was the first trade that got put in. And look at that thing, 102.95, 152, and nothing crazy. You won't see anything crazy where I'm going like 500, just because it's nothing to do with the ability to trade. It's everything to do with the account size. In this account size, I can't take a lot of risk. It's only $1,500 account. So I can't just say, let's go 2 lots, 3 lots, finish it, right? So this is the progress. So this got graduated into round 2, PA, no problem. So when I got into PA, I kept the same thing, a little bit. So let's go into and log into your PAs, the pro account. And same idea, if I pick the account, this one, same. One day it was very good, 367, but the remaining 85, yesterday on February 19, I made $81 in this account. What was my ultimate goal? They allow you 5 accounts. So now, if I make $50 on 5 accounts, with a copier or without copier, some I copied, some I didn't, because some are still in 23,000 range, right? So they will come into, 25,300 something range. So the moment you have one account graduated, you have a daily income stream right here, $100, $50, 150. You made 200 and then the night withdraw it. You can build your account 15, 16, 17, 18, but above 1,500, you can withdraw everything, right? So this is a live example of what to do if you are looking to get into trading part-time with as little as, how much did this cost me? 75?
plus I think 150, 148, so 130, I think, for the second. So $200 for a PA. And now I can, so whatever money I extract out of this, put into per dia, whatever. So you can gradually build this account. But again, even guys, just आपने कल एग्जाम लिया है, $100 every day बहुत पावर रखता है, बहुत. 15 दिन में एग्जाम क्लियर होगा, अगले 15 दिन में आपके पास पे आउट्स. तो उसका रूल आज हम आपके साथ पहला मिड बैंड लेंगे. नो स्टॉप लॉस 10 टिक्स का और टेक प्रॉफिट 10 टिक्स का लगा दीजिए. कोशिश करके प्रॉफिट ज्यादा रखें, अगर उसको ट्रेल करें. Stop loss of wait 9, maximum 8.5. Max between 8.5 to 9 is the maximum to get your stop loss. That's the math behind it. You were saying that you put your strike order Mhm. and you that. Yes. So No, I put a stop loss too in Yeah. case 60 वो जो upper range है उससे ऊपर 5 पॉइंट. profit भी लगाया था? नहीं, फिर तो मैं साथ उसको मूव कर रहा था ट्रेल को. You went there and then you were. Yeah. So once it got picked up, I was just trailing my profits. लीजन में भी सेम बात आप समझे हो? Sorry? लीजन में भी Same. So Legion is slightly different. Legion wants you to complete round 2 with different rules. I'm not pushing take profit. The reason is it's a little bit of a difficult in round 2. They turn on a feature called live trailing threshold. And that's not so easy for beginners, right? So beginners stick to Legends. It's a better choice. But same idea. Finish your EA, graduate, get your and then get into your PA, make $2,000, get $1,500 out. You feel it's a great thing. But again, I tell you guys the area trade live anyway. Like so, yeah, mid-band. I'll start telling as of today. So if you look, this chart is red, this chart is green. There's no trade, right? If you want to make sure there's a trade, both charts have to go into the same color before I pick a trade. आज unemployment claims इतना फर्क नहीं पड़ा. It didn't get too great. Yes. Oh, my charts are even not updated. I'm gonna disconnect everything. What do you mean to confusion in large triggers? Large triggers are right here. These things. You see, there's these lines that are crossing over. So these are called large triggers. So in order to get the best setup, price must come from higher high. Number one. Background color must be green. That's 2. Third one is large triggers. So in this case, large triggers are green. Only thing what is not letting me push this trade in is this chart is saying I'm still magenta, right? So there's no trade right now. Okay, no problem. So mid-band, you take the entry right here. Some users will, so there's 5 or 6 things you gotta check. Up to 6. Some users just take 1. In this case, if somebody wanted to just take, this is a mid-band trade, they will go in, maybe take a couple of points. So if you confirm with this, it's better. So mid-band trade, these 2 charts, same, higher high, large trigger. So only one condition is not matching here, which is this chart is still
in bigger time frame saying that I could go down. Sorry, new day starts at 6 p.m. Yesterday. So the whole 23-hour futures market, 6 p.m. is the day you till 5. Yes. All right, Daniel is going to take over anytime. So what are the areas? So the first area we wait for is the night high. Night high 57 to 60 will become your R1. And the free stream, I'm going to turn off as soon as Daniel is going to. All right, sorry, coming back to Nasdaq. Nasdaq FTMO. Let me double check quickly. Yes. Reload, yes. Natural gas, Thursday. Natural gas touched expected high at a midnight. My God, we didn't take that trade. So natural gas is done. Copper, nothing to do. Silver, nothing. Crude oil, nothing. Gold has a divergence to the downside, which it did. So Russell is in R1. Nasdaq. Give me a second. R1. At least, guys, wait for Nasdaq for 350. 350 is my upper band. I gotta wait for 350. R2. So whatever the FTMO price is right now. So let me open my Meta MT4. And let me open my C Trader for FTMO. Ninja is open. Order submitted. Yeah, there should be live stream on Super Areas. Let me check Studio. Sorry, guys. I think, did I not do this? If you log in, live stream should be there. Copy. Yeah, live stream is there. Try now, refresh live stream on. It should be okay. There's a 60-minute chart, upper band is about 340 as well. So Nasdaq stick to 350, 340, 320, 320, anywhere from 320 to 340 is your entry for FTMO. February 19th.
Let me check what's going on with the stream. Superareas.com or let me see if I can fix one thing here. All right, let's see which way it wants to go. First entry on mid-band gave us a gap trade almost. ईएस पे क्या, मैं नैस्डैक सिर्फ एरिया करता हूँ। नैस्डैक पे हम कोई और बात नहीं करेंगे, जब एरिया आ जाए वहां से सेल कर दें या बाय कर लें। Morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Satya Sarthara. Microphone check. Walaikum salam, ji. Walaikum salam. Good morning, everybody. Vikas, good morning. Tanvi bhai, good morning. Walaikum salam. Good morning, Wilson. Good morning, Saurabh ji. Chaji, good morning. Waiting for name. Assalamu alaikum, Daniel sir. Please, apna naam even yesterday I mentioned you. Waiting for name. Please enter your name, ji. 9:05. You send me message. Everybody, just check. I think the guy know. If you can, just call me after my briefing and I'll let you know how to do it. Junaid bhai, walaikum salam. Ash, Alpha ji, Manish, good morning. Nazim bhai, walaikum salam. Harleen, good morning. Manpreet ji, good morning. Clifford, Sunil, Sanjay ji. Good morning, Sanjay. Gigi, good morning. Ajay, good morning. Arun ji. Anil ji, Sukh ji, good morning. Saurabh, Gaurav, good morning. Jagdeep ji, Ali, good morning. Everybody, good morning ji. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. We're solely responsible for all your action. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes. Always place your thoughts and are ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think. And treat this market the very first day we treat, and all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. Then we take no responsibility for any action taken by any subscriber.
Today, our S&P 500 base right now changed to the upside. Base is up. Pressure is down, and Philadelphia Manufacturing Index way bad, very worse than the previous one. So red to go up and green to go down. But then we have a very important speech is coming at 9:35. It will roll over even CB leading index. So CB leading index. First it goes against the color and then goes in the color after 11 o'clock. Means if it's red, first it will go up, for green it will go down, and then it goes in the color. But today, I don't think so. Any news will impact the market all day till 7:20 p.m., even 5 p.m., 2:30, 12:05, 12 o'clock. 12:05, 2:30, 5 p.m. We have speeches going on, FOMC member speeches. So today will be just keep eye on our R1 area and R2 area will be very strong areas. And when a night session low, definitely I'm expecting 6130 area, 6130 to 29 area to the downside should be tested. So S&P 500, our expected high is 6190 to 62. Mostly markets areas are same as yesterday. Low is 61 to 60.90, and Nasdaq, our high is 22,410 to 450. Our low is 21,950 to 900 for Nasdaq, our low. Striking prices are same. Striking prices did not change. Nasdaq just break our night session high. Actually, this is our night session high, 225. I will consider this is a night session high. And not much movement. Previously, 2.5 to 3 weeks, we don't have a much movement. And same thing if you look at the bigger picture. Even the Bitcoin is in doldrum. Just previously, like 2 weeks, it's in doldrum. S&P, Nasdaq, all these markets. Dow break night session low. The Dow break night session low. And remember the value area. Our Russell 2000 filling up the value area from the down to the upside, and S&P get inside 60% fill up the value area. It's 60% fill up the value area, and right now sitting at PP and above our green midband. And we'll see after 9:35 what will happen. Actually, this really impact will get after 10 a.m. and after 10 a.m. we'll see which way the market is going. Right now, it's dead. The 13 point up and 14 points down. This is nothing compared to the S&P movement. Yesterday, 37 points pushed to the upside, exactly hit our R1 area. And from R1, we have a push to the downside and came down and test our S2 area yesterday and went to exactly after 2 o'clock, hit our R1 and shoot to the downside. 26 points to the downside, 13 point, nothing much pushed to the upside, and 14 points down. So 10 o'clock will decide which way the market is headed. Same thing with the Nasdaq. Nasdaq bounced back from our S2 area, and not R1, but it gave us the 181 points push to the upside, 87% push down, 158. But eventually, I'm expecting the low of yesterday. The market should come down and test our yesterday low. So high to go low would be a good strategy even today. Overall, then British pound is up. British pound because US dollar get weak, so British pound went up. So in between, I would say 60% close to R1. And the Canadian dollar almost hit our R1 area, almost hit our R1, and just slightly below R1, above value area. Actually, get inside the value area to fill up the value area. And same thing, Euro, very close to our R1 area. Euro, very close to R1 area. Crude oil is going up. Crude oil, 93 cents from midnight. From midnight, it went up to our filling up the value area above R1. Just fill up the value area and R1 area.
Previously, if you remember, our FDAX was going up and just a tank. It's so big push, $570 push to the downside on FDAX. And again, get inside the value area and fill up the value area. Gold is down, came down, fill up the value area. Just less than 1.5 hours, fill up the value area. Hit and kiss low of the value area and shoot to the upside and at top of the value area. So only in value area we have $15. Just in few minutes it filled up the value area to the downside and went up from the low. You see the power of value area, guys, how strong it came down, fill up the value area and from low of the value area and shoot to the upside from 29.40 and right now at 52 area, 29.52 area. Copper is up, copper above R1, just hit R2 and right now above R1 area. And silver mostly always it goes with gold. And silver base is up, pressure is up, above value area, above PP, mid-band is green. And right now at slightly at R1 area. Natural gas, my God, it went up brutally, almost 92 cents, $10,000 value of $1. If and just imagine from 16 start bouncing back up, 18, 19, 20, and today is our 20, and it went up 92 cents. That's almost 8,000 plus push to the upside in just 3 days with one lot and very nice strong push to the upside. Bitcoin now start bouncing back up at if you see right now at spot is 98,000. Just from yesterday. If I can consider just tonight from this morning, yesterday low, it went up $2,840 push to the upside, but overall from 93,300 to 98, that's a big push to the upside. More than $5,000 in just 1.5 day, and still it's pushing up, very strong push to the upside on our Bitcoin, and same thing with the Ethereum. Ethereum $96 was the upside, but overall, if I compare from the low of 2,600 and $9 and it reached to our Arun ji apna mic off kar deenge, Arun ji, and to the upside. Overall, guys, S&P, remember, high to go low would be a good strategy anywhere, mid-band magenta or black candle to the downside. We are expecting this push to the downside. Please, guys, again, 10 o'clock. After 10 o'clock, we'll see the leading indexes coming. So anything happen, we'll see after 10 a.m. Nasdaq bounced back from 225, 84 points from the swing low. This is a retracement. And yeah, tomorrow, same thing, not much news, but Monday we don't have any news. Remember, if Monday we don't have any news, so Friday, tomorrow, you have to be very careful. Best is area to area, and every day. If you want to make a very good, handsome money, pick area to area in these days. Once you have uncertainty, you go short from R1 area and go long from R1, S1 and then S2 area, you have like 99.9% profit, even less, but guaranteed profit from the areas. Get in, get it done, get out. Don't stay and don't expose yourself in the market. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here, G. G, Flash PMI, G. Tomorrow we have not only Flash PMI is coming, we have our existing home sale. University of Michigan consumer sentiment means our inflation data is coming at 10 o'clock. So we'll see if it's higher than previous. Definitely, the market will go down. We'll see tomorrow what will happen. Something regarding natural gas, we hit
lows, but still we are out on 240 charts. Well, sorry, it has to go down. It has to go down. Even yesterday, yeah, we have a conversation, and I exactly gave the area of natural gas. So how low this natural gas will go, and exactly I can tell you how low I'm expecting before this contract. Remember, you have to be very careful. In 3 days, 4 days, our contract will renew for our natural gas. So before even a contract, so you're still expecting a little bit more? 750, 75 cents, $3.75. $3.75. Okay, thank you. And then we'll see a push again to the retracement, and then goes down further. Yeah, thank you. After March, we'll see a dip to the downside. Sir. Well, this cold weather can continue, so you know. Yeah, of course. Okay, thank you. You're welcome. All right. So area to area, how to go low. Area to area, high to go low is the game plan that got announced. We'll stick to the game plan R1, R2 for the area. So now enjoy the match until area comes. There's no trade. Don't just get in just for the sake of trading. Like for the last 10 minutes, there's no trade. One is green, one is magenta, one is bottom, one is over there. You're going to mess up your trading. So for ES, I would still prefer R2, but let's see if it touches the night session high. All right, so the free stream mic is on. Everything is good. Let's set it all up. Did you guys get a chance to watch the video on the how to buy, sell, stop loss, everything? That's good. Just practice that. Even market is because you guys are still in the demo, right? So practice putting an order, limit order, putting a stop loss. When the order is, forget about green, red, magenta, I don't care. You guys need to get your hands on buy in demo, buy, sell, stop loss. Buy, this is where I would sell, this is where I would buy. So ignore the background colors and just practice buying and selling. Somebody asked me a mouse. I do have a spear, but I use a ball mouse. I don't use the real mouse. So, so डोंट वरी, 2 बजे तक अगर कोई ट्रेड मैं लूंगा आपको भी बता दूंगा, लेकिन कोई ट्रेड तो आए. हाँ जी, पूछो. बिल्कुल सही है. लेकिन आपने एटीएम नहीं लगाई, आपने मैनुअल लगाई, एटीएम नहीं लगाई. ठीक है, बिल्कुल सही है. हाँ जी,
ऊपर की तरफ या नीचे बिल्कुल 100% सही है। ठीक है सर ये आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट में किया, ये आपने एटीएम नहीं लगाई, 10 और 1 वाला नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब ये है सर Nasdaq हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने मैं इस चार्टों पे नहीं लगाता 30-20 पे, उसको आप लगाएं ना 15-10, आप लगाएं जाके 60 मिनट्स में एरिया वाले चार्ट पे, ये तो स्क्वीज हो जाते हैं, देखने मुश्किल हो जाते हैं एरिया वाले चार्ट। एरिया वाला चार्ट हाँ, लेकिन आप लगा सही रहे हैं 100%। या सेल एंड स्टॉप लॉस, बाय एंड स्टॉप लॉस, बिल्कुल सही, नथिंग रॉन्ग। All right, market did crash a bit, maybe testing the nights of, remember, base is down, pressure is down, so it's heading towards S1 soon. So our value area is where? Yeah, so 34 is our value area. Let's very close, it got there. What a big jump for Nasdaq and EN. S1 ठीक होनी चाहिए। Cool. Trying to fill up the value area. Now you guys should place an order of 6141. That's your mid band. Everything is magenta. I don't see anything wrong. So 6141. Sell limit. Sell limit 6141. Slightly higher. Sorry, 6142 would be a better. So 6142 is your entry. Because both charts are magenta, price is coming down. So what you're saying is price should go to 6142, and then you are going to sell from there. So computer is saying, so 6142 we are selling it, and Yes. then we're gonna buy it when the profit goes. so we can do the stop loss of 6142 plus 4. Yes. 6143. Plus 4 points. 4 points, not Yeah. 4 points. Yeah, that's a maximum. So your true stop loss should be 6135.50 minus plus 8.5. So 6135, it's actually changed. 6134.50 plus 8.5. So your stop loss, but remember your order is moving down now. Yeah. So we are at the value area, guys, very close to S1 now. It filled up the value area. है जी सर 32 बाय बनना चाहिए so So your sell would be somewhere around here. Yeah, somewhere around here. So yeah. So that's the first reversal that's coming. Let's see. But area is already there. Now it's trying to test the value area maybe one more time. Large triggers, everything is fine, but we'll see. Six 141 तक है 41 है There you go. Both are heading towards your S1.
Nasdaq is slightly farther. Nasdaq is only 37 points to go. 37 divided by 7, that puts it 5 points. 6136 minus 5. Yeah, so 31. If Nasdaq goes to S1, ES will get inside S1 as well. Let's see. Sorry? Buy तो आपका S1 के अंदर होगा ना? Nasdaq का 100 बनेगा. Nasdaq is pushing a bit down. 22,000. It's heading towards it very fast. So let's see. ट्रेडोवेट खोले ना, ट्रेडोवेट खोल के आपका डेमो है, ट्रेडोवेट है नहीं वो ट्रेडोवेट तो ट्रेडोवेट की वेबसाइट खोल के उसको रख के वहां होगा, ये इसमें तो नहीं होगा अभी क्योंकि लॉक हुआ हुआ है, लेकिन ट्रेडोवेट खोल के रखें. हाँ अभी यहाँ से आप एग्जिट. हाँ हाँ ठीक है, प्रेस ओके, दैट्स इट, हो गया, कैंसिल हो गया. अब इसको डिस्कनेक्ट कर दें, गुरु कनेक्ट, लेकिन वो बेशक है वो हो चुका है, डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट एंड इट विल बी ओके. वो जो छोटा वाला बार क्लोज कर हाँ एग्जैक्टली, दैट्स इट. So if you get stuck here, go quickly to TradeOvate and close your options there. Guys, very close to S1 for Nasdaq. Very close. We are almost there. Let's see. Hadi? How many? 2 or 3 micro, depending on your account size, right? So truly depends there. है? ये मैं भी देखता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा. There you go, we're in the area, guys. Oh. Let's see. Come on. And we are in the area. Let's see if it respects it. No, 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 it broke. It hit my stop loss because Nasdaq just went so crazy. Okay, pure stop loss. I don't know, to be honest. Nasdaq went to S2. There you go, damn straight. That kind of went a little too fast. Straight to S2.
S2, still waiting for it right now. Let's see if it gives me a bit of a break or not. हाँ हाँ आगे मिड बैंड तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन एरिया आपका जरा स्टॉप लॉस ले गया मेरा S1. Still wants to get into S2. That came fast. Let's see if Nasdaq wants to test S2 one more time or not. Gap was so little between 80 to S1 to S2 for Nasdaq, only 40 points. All right, we're back in S2, but that mid-band got missed by a point. Oh, we're in S2 fully. S2 worked, but still rocky. Testing one more time S2. Yes, two हो गया अब enter हुआ जी. Now my order got picked up. But it's not stopping whatsoever.
second stop loss got hit, even from S2. Sorry. Two stop losses back to back. No, not stopping whatsoever. $37-point swing to the down. S2 good. Expected low maybe next. Let's see. Almost close to expected low. Straight down. Any particular news? Expected low, didn't respect S1, didn't respect S2, and now it's respecting. No, it's 50 points drop, so. That mid-band worked. We can go more down. 50-point drop, wow. Nasdaq came down. नहीं 5 पॉइंट S1 से नीचे 5 पॉइंट S2 से 5 पॉइंट से ज्यादा तो अगर 5 पॉइंट All right, went back up, so didn't cut expected low quite, but that came out of nowhere.
Are you trailing? You need to understand your loss first. So if you are saying price may go down and you are about to buy something, you know, like you say, maybe to buy something, maybe to buy something. 6189, the buy price is 6120. Got something recovered? So went from how much? To 21,950 to 277. No, I didn't, because it was so severely oversold, because it fell down almost 50 points. I didn't sell. No. Because the market really fell almost, straight down 50 points? 47 points. Anybody took a short going down? I don't know, along the one line? That's good. Now that's a mid band to go, but it's not coming from higher high though. Why my flag was showing 12 and Sorry? yeah, my flag was showing 12 when I start the order. No, that 12 lots. Maybe you have quantity. Check a look. Quantity is one. Okay. Quantity is one. That's why I'm more confused. Put in an order. Let's see. Let's do the order again. Because it was showing in thousands of dollars. Put the order here. Yeah. Why is limit one? Now expected low, testing one more time. It's going down again. Sell it here.
So if you don't put a stop loss, this is the reason we put a stop loss in case market doesn't stop at the area. Counts. I made 102 micros. I can make 844. Stop loss का देखिए Let's see if it goes to test S3 one more time. See, you can't take a mid-band. It's not coming from a lower low though. Yeah, it's recovering from expected low, but didn't get to expected low so much. We missed it by 2 points. Hi, Jenny. Can you delete that order? Oh yeah, sorry. That was a notice that you Yeah, yeah, वो तो उतना ऊपर पड़ा हुआ. market tanked. Even 2 micros gave me rock star of this take profit. 2 micros. $180 on 2 micros. This is how fast I recovered. Yeah, it may stay low. I don't know, but we'll see. $255. Let's close this trade. Profitable trade. So recovered, but see 2 micros. I hopefully only took 2 micros. Let's see.
Now it's going back up sharply because Nasdaq decides to go back up. Just take the order, when it touches you, then I have to take it. Order खड़ी whatever. As soon as you click it, just take the order. It's right now this one current. अब तो सर वैल्यू एरिया पे वैल्यू नहीं है वैल्यू अब तक खत्म हो गया फिल होके तबाह के भी होके वापस भी जा रहा है but now it will act as a resistance if it's going towards 34 it'll act as a resistance. Touched expected low 950. What was the area? 2 ticks missed. दुआ करो कि सब ठीक है लेकिन एक बात ये तो Nasdaq areas were too close from S2 to yeah, we do futures here. Nasdaq, Russell, Dow, crude oil, natural gas. Comes here, and the stop loss is here. The order pick up better if you look at it and start working. Yes, better be on the place. And get you a pick better. So order pick there. Yeah, not any of that anything. So this way we can do also the same thing here, bring it here. So I'm gonna put it to the top also. Okay, so look at here, let's keep going to the top also because it's different. Micro never kills you. Base amount is set. What price we got it? देखो हो गया मैं उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा पासवर्ड
It recovered, most of it recovered from expected low back up to S1. So if you were micro, had the lots, no stop loss, still recovered, not a major. नहीं नहीं पहुंच जाएगी जिस स्पीड से लेके आए हैं. मैं तो लेके जाता हूँ 2 लाख में सिर्फ 30 लेके जाता हूँ, मीनिंग के 2.5 mini, 30 Nasdaq. Yeah, so if you want to do a half, S&P का आपका 1-2 लाख का है ना, आप लेके कल कह रहे थे 20 लेके जाओ. 50 lakh. It's 1 point, exactly 1 mini. If you go 25, that's half a mini. If you go Because it's 10, 20, 30, 40. 30 lots like it was. correct. When can I start? You can go on superareas.com and you can start the trial right there. Oh man, I love the volatility. Every time it got to S1, I shorted again. You can नीचे से आ रही थी ना? S1 worked out as a incredible. So shorted here and shorted here. S1 resistance बनी थी ना? S3 से bounce की तो मैंने मैंने वहां से 22,100 से सेल कर दिया था ना. Area to area today. So first stop loss got hit S1. My second stop loss got hit S2. Very close to S3. Yes पे 200 पहला हिट हुआ, दूसरा हिट हुआ. ये 2 stop loss हुए. Expected loss से मैं लॉन्ग कर दिया. तीसरे वो सारा 400 से भी ज्यादा रिकवर कर गया, प्लस $80 दे गया. So must do a stop loss, otherwise है आपका निंजा क्रैश हो गया स्पीड के दौरान. सारा कुछ जो हुआ है ना, उस हॉटस्पॉट से करें. This mid-band worked. Everything was aligned. Price was coming from high. Both were everything's fine. So now this is the mid-band you do take. So 5 condition has to match. Your background color has to be green. If you want to look, the price has to come from a higher high. But what is the third? Large triggers are green. Your large triggers are green. And that's about it.
61.22. Around 61.25. So now you should be trailing. If you're took this mid-band, should be trailing, if possible. It's up to you. You took one. The price comes to 61.22 band. You can buy it here. Stop loss is here. Now it's in consolidation of your area. Are you trailing? No, we don't buy right now. No. We don't buy. It's coming from the bottom. So it's a resistance. Both recovered from S3. Very close to Nasdaq. Yes. Sorry? No, both markets we are not buying at the moment. We took one buy so far, one mid-band. That's it. Nothing else. So in this whole fiasco of last 40 minutes, anybody who wasn't trading areas didn't have to worry. But I took an area S1, didn't stop ES there. S2, it didn't stop. When I went to S3, I had 2 stop losses, right? So now only time this was a buy. One, because going down, there was one mid-band I think we got or not. Did you get the one mid-band going down? Okay. Let me check back where was that mid-band hit? Because from 934, it didn't really hit that mid-band. Because I missed it by 2-3 ticks going short. So this was the only first trade so far, the mid-band trade. The market falls 5 times faster than it. सर हॉटस्पॉट से करें क्योंकि यहाँ पर 50 लोग ना उसी आईपी पे लॉग इन कर रहे हैं. एक सेकंड, अब एरियाज आपके अगर R1
R1, R1. 57, 60, Yeah, 57. R1, R1. ठीक है, जितनी तेजी से नीचे आई थी वापस भी जा सकती है। मिड बैंड तो हो चुका है, ओके बोल के वो तो ट्रेल कर रही हैं पीछे बैठी, वो ट्रेल कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ये वाला मिड बैंड ले लिया था ना। वो ही है देखिए हायर हाई से आया आपने कहां से एंटर किया? 20 से। Now it's trying to break S1. और सर ले आ लॉन्ग थोड़ा जा, तो राइड मिस होगी, बड़ी प्यारी एक्सपेक्टेड लॉस। Now it's struggling to break S1 now, recovery from. इतनी रॉकेट साइंस क्यों कर रहे हो? 10,000 वायरिंग अभी तो सोन रॉकेट साइंस डबल क्लिक करेंगे। ओके ओके मोर का सेटिंग All right. We have been starting with the loss by Came down 47 points, went back up to almost 50%. That's all. Whenever you have time, because I always watch more live, right? I want to see the Nasdaq, like just one view. Right here. It's running. This is Nasdaq. When you show the 35% Okay. going up and then a little down, right? So I just want to see that, okay, you made the 35%, I decided that okay, I'm going to make the 5%, right? Yeah. So where, on which chart? The 30-20. But Nasdaq, the most powerful is the areas, right? Yes, yes. After that, it's the divergence trade. So if you see, yeah, you can. So what I do is I watch for the swing to at least go 35 points or up or down, right? And then let it touch midband and break this. But when it's too fast, how I'm going to do that? No, you already know this number. You already know this number. The moment it makes a higher high or lower low, you know that number. So that's where you would do a short. Okay, so Overbought. chart trade, right? Chart trade. You gotta do That's chart. the part I don't see. Oh, you don't do this on anywhere else.
No problem. There you go. I shorted from S1 again, and beautiful. Okay, your second mid-band came. Mid-band came and it touched and went back up. And you got your 2 points right there. So everything is green. Price is coming from higher high. Touch the mid-band, and now it's going back up. So nothing. So this is so far our second mid-band that everything got aligned. If you got 100, that's still okay. Maybe only thing is large triggers are twisting, so they may go down. Then if you large triggers are twisting, then no, not sell. Sell until the background color changes. You sell with the trend. We will not sell until 30-20 and 15-10 are green. There you go. One more time goes down. अब hit हो गया होगा stop loss. Yeah. Only thing was those large triggers were twisting. That was but it did give you a couple of points from that. So 2 mid bands since 9:30. Just market without news is so volatile. सर वो कोड वैलिड सी पर्डिया ਦਾ 100% वाला उन्होंने किसी ने 100 अकाउंट लए तो उन्हें ईमेल आई ना और क्या सी सारे बंद कर दे लेकिन 450 लाख निकल गया हाँ पढ़ा वाला ठीक है लेकिन किसी ਨੂੰ 100% ऑफ भी मिली सी ना ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਉਹ एग्जैक्टली मजे ਦੀ ਗੱਲ है नहीं देखो 80 तो ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਾ 450 ਦਾ 500 ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 450 ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਚਲੋ No, but that was crazy. 100% off, you know. All right, going back towards expected low, guys. So if coming from S3, if you shorted S1, you're done. I'm not in any trade whatsoever. अब आप sell कर सकती हैं. Wait. Don't sell it now because 30-20 is coming from higher low, not a lower low, right? So that may be a retrace on 30-20. So don't do a sell yet on this mid band. Even though price is coming from lower low on 15-10, look at 30-20. It's not coming from a lower low. It's coming from a higher low. 30-20 ka mid price dekhe na? Yeah. So what that means is 30-20 may touch back up and go back up, right? So this mid band is slightly risky. So because it's not coming from a lower low. You see this? It's coming from a lower low, right? But here, the price is coming from a higher low. So it may go back up and up there, which means it will break this mid band. So when both are in the sync, you have the highest possibility of not losing your trade. So in this case, higher high. We took the mid band, previous one, and everything was good, right? So let's see. It actually did give 2 points. Only thing is, ये कल वाली गेम प्ले हो रही है पूरी यहाँ पर यहाँ से निकल गई थी. So I am waiting for the price to get to 34. This value area, this number. This would be, I will short from there. 3334 is the number because that's the bottom range of the value area. Resistance. अब नहीं जाने देंगे इतने 10 दिनों से ना फंसी हुई थी प्राइस ऊपर 2000 250 250
Only thing I overlooked, the gap was so less between S1 and S2 for Nasdaq. All right, coming down. Divergence on 1510, guys. Just keep talking. We don't want to lower, right? Because we have to lower time. We can get that central. Even though divergence still passed the midband. Divergence line के बाद भी touch करके नीचे आ गया. है? Divergence काम ही नहीं कर रही. है? हाँ 15-10, 30-20 में हो तो कानों को हाथ लगाएं, वो तबाह करती जाती है. अब ये 60 मिनट की डाइवर्जेंस थी जो हुआ आज. 60 मिनट, सुबह आपने यही कहा था ना, 60 मिनट में ब्रूटल डाइवर्जन है नीचे आने का, तो किसी भी वक्त डैम टूटना है और निकल जाना है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल शायद जो गुजरा है कल इसमें होगा. No, it's not about the chart doesn't move with time. Okay. वो F पे क्लिक कर दें, ऊपर टॉप राइट पे F पे देखिएगा.
You're on the same line. Can you get it? Do something. Connect it to your hotspot. If you connect your computer to your hotspot. You're not even connected to your. No, you're not connected to your, what's your phone? No, just turn on your. Shut it down first. And then back inside. What phone is that? Now it's getting connected. Came down more, one more time, expected low. Let's see mid-band. ठीक है. No problem. Back into S2. Let's see if S2 is strong.
Yes. Click the push and right button, open. Hmm. 2057. Still going down fast and hard. Maybe trying to test expected low one more time. Okay. I'm confused. Okay, from bottom to top. Stop procedure at the time and buy the paper. That's what happened. Okay, so do it again. So, you have to be in the okay. This is stop. जी जी एक सेकंड दीजिएगा जस्ट Yeah. So, depend on the president and the buy paper and then trade. I'm gonna get that. Okay, so let's go on. I don't know if it's available. So you can bring it down. Okay, click it. No, you're clicking in the wrong place. Hina X, click it, Hina X. You don't click this X. Yeah, right here. हाँ जी sorry you had a question नहीं FTMO में बार से बाहर निकलने थे 60 मिनट के बाहर से तो निकल गई है 240 से बाहर नहीं निकले अभी अगर लॉन्ग जाना है तो बार के नीचे से या उधर देखिए उधर था 350 ठीक है इधर पता है क्या बाय में मैं आपको बाय बता देता हूँ यहाँ पर है सर आपका FTMO अगर आपने करना है ना तो बाय में जाना है एटलीस्ट 740 तक का वेट करना है और आपको बाय में जाना है ES में एटलीस्ट 6057 तक अभी यहां से 605 है हाँ क्योंकि वो 240 का बॉटम है FTMO हम 60 240 1440 कर रहे हैं 60 मिनट के बॉटम से मैंने लॉन्ग किया था ठीक है थोड़े से पैसे लेके बाहर आ लेकिन 240 अभी दूर है तो अगर आज मार्केट गिरती है कल गिरती है परसों गिरती है तो 240 के नीचे आ जाएगा सारी करेक्शन हो गई जितनी ये सारा रौला चल रहा फिर वहां से हम बाय करें 240 के नीचे जब तक नहीं आएगी लॉन्ग नहीं करना लॉन्ग नहीं शॉर्ट में क्योंकि अभी क्या हुआ है अभी 240 के मिड बैंड को टेस्ट हो रहा है तो विल सी कि ये मिड बैंड स्ट्रांग है या यहां से वापस जाती है तो Change the number.
मैंने 60 से लॉन्ग किया था, जब नीचे गिर गए ना 60 का बॉटम आ गया नैस्डैक और यूएस, मैंने एफटीएम और डाल दिया। आज गिरी नहीं एफटीएम में, जब लॉन्ग किया था 60 मिनट के पार पे, वो हुआ इतना तेज कि मैं अनाउंस ही नहीं कर सकता क्या मैं ले भी चुका हूँ लॉन्ग, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड S2 पे हमारा पहले वेट हो रहा था। अभी ये अभी देखें 60 मिनट के बैंड के बाहर खड़ी हुई है। ये 60 मिनट के बिल्कुल मैजिक बैंड के करीब है। नहीं यूएस नैस्डैक दोनों बिल्कुल 60 मिनट के लोअर बैंड से बाहर आ गई है। हाँ जी, लेकिन इस वक्त लोअर बैंड पे खड़ी है। हाँ, नीचे तो गिर चुकी थी। नहीं, डिफरेंट एनालिसिस ने वो मैं नहीं देख रहा, सिर्फ ट्रेंड बैंड देख रहे। अब दोनों चार्ट लोअर लो है, आपकी सेलिंग प्राइस बनेगी 6113 पे। 6113 हाँ, वहां से आपने एंटर करना शॉर्ट पे 6113, क्योंकि बेरिश है ना, तो आपने शॉर्ट में रहना। One more time, expected low. Sir, expected low घटिए रहने दीजिए। पहला जड़ा ना बिल्कुल टच करके 2 टिक्का तो निकल गई सी। एक्सपेक्टेड लो शुड बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। One more time, it's coming. Next candle is open, 11 o'clock candle. Let's see. Likes to go up or down. चल बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं नजर आ रही। लार्ज ट्रिगर्स
Let's see. 7.5. ठीक है जी, चल गया, कोई गलती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों लोअर लो से आ रहे थे, आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट दे रहा है। हाँ, अगला 30-20 कमिटमेंट है, उससे अगला अगर यहाँ से ले लिया तो 30-20 वाला चेक कर सकते हैं। अभी नैस्डैक पर डिपेंड करता है कि इज इट गोना ब्रेक मेक S2 एज a resistance or as a support, that's the question. $30.20 is testing right now. Let's see. $30.20 worked as well. If anybody took a 30-20 mid-band, hey, ठीक है, no problem. ले ले, ठीक है, सही है, no problem. तो गैप ट्रेड है, ज्यादा बनेंगे। हो गया, उस ट्रेड से निकला है, दोबारा नहीं एंटर होना। ये 2 लिए, 1 लिए, never again. So, you guys took that trade? Trail if you can. Trail. Okay. No, you cannot hedge in only apex. अच्छा जी सर, आपका क्या क्वेश्चन था लेजेंड्स का? ओके, बिल्कुल 2 लें 3 लें। लीजन में मैंने डे 1 में मान लो मैंने $200। मैं अभी ना ड्रॉ करके लाइव करते हैं ताकि सारों 7 दिन का रहता है, 7 दिन के एंड पे हमें क्या करना है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक लाइट बंद कर दीजिएगा आपके पीछे वाली, सिर्फ एक ही, one is good. So let's draw legends. आपने कब बाय किया था?
कल से start किया, परसों buy करना, कल से So start let's put it February 19th. Okay. So put February 19th, 2025. Buy कब किया था 18 को? Okay, let's put 18 so we know exactly. No, they will count as a trading, not a trading day, as a day. So on March 17th, 2025, your 1 month is complete. Okay. So you must complete, you paid $33 US. Sale tha na 80% off. So you must complete your exam within that time. Now, this is how is I showed you on thing 25,000, 1,500, 26,500 and 0. So this cannot, this is negative 1,500. This is positive 1,500, right? This is how the ledger is. So, so your rules are make 1,500, don't lose 1,500, close your trade at 4:30, trade for at least 7+ days, and the fifth rule is no more than 450 a day. So you said the first day, so let's do it this way. I'm gonna make 7 boxes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. It doesn't have to be 7. You can complete your exam in 30 days, 29 days, 28 days, 27 days. Doesn't have to. What they're saying is no less than 7. Okay, so yesterday you traded. What was your P&L, profit or loss? Plus or minus? Plus 250. Great. So this is 250. They didn't give you any additional threshold because you already have maximum, right? And you 1 day got counted today. Plus or minus? Plus 270. Very good. And this is now for whole class. What type of trades are you doing? Mid-band or area or value area? So just in case, mid-band trade. All right. Perfect. So both are red, you're selling, both are green, you're buying. And price coming from higher high, lower low. So I just want to, for everybody else, he's not doing anything that you don't have. Only comes down to, I heard something beautiful. Everybody's computer is the same, knowledge is the same, but the brain is different because your emotions are different than, so he managed to knock on wood again. His discipline is the difference between a winner trader because knowledge is same for everybody. You're seeing the same thing. You're estimating the same thing. But one guy traded one here today. Two trades are done. Now look at 200 and 200, 400, almost $500 you have made. However, day 2 is counted as well. Now you only have to make $1,000, okay? But you can still, how did it all start? 1,500 to 1,500. Now you only have to make 1,000, but you can lose 1,500, which is a good sign. You have managed to offset the gap. So day 1, you started with 1-to-1 ratio. Now you have better ratio. All you have to do is make 1,000, but you can lose 1,500. So if you continue down this path, you are going to be maybe done in 6 days or 7 days. On 7th day, put a trade in, let's say for $50 and call it a day. But if you still go 100, 100, 100, 100, 100, you can take 10 days, 12 days, 15 days. They don't care. All they care about is don't do this before 7 days. So let's say tomorrow you manage to make 450 because things are okay. You're changing your lot size to 2 maybe, and then going, so 4 to 6 to 8, you're almost $900. And another day you make another 450. You're technically done your target, but they will not let you graduate. They will say still trade for more days. So my recommendation, stay within 150 to 250. That's a reasonable range, and you should be okay. Yes. So if I lose 250 per day, Yeah, okay, let's assume I'm going to do a plus here, and you did lose 250.
Remember, your threshold went down too because you lost from your threshold and your target. Now you have to make, so this cancels each other out, right? Because these two were the same. I'm just canceling. Now you're up 270 in your total, but you're down 250 from your threshold. At the end of the day, this doesn't matter so much. Even if you have $700 threshold, but you pass, you pass. You don't have to worry about that, right? So End of the day, we cover, right? end of the day, maximum. See, some users, if they go down, let's say $300, and they find a good opportunity and they recover, upper ceiling is 450, even though here they made almost $700, which is okay. So if you lose before 6 o'clock, you have an opportunity to recover, but before 6. The moment you go after 6, that counts as the next day. So you cannot, it's not like you lost 300 yesterday. Today, can you make 700? No. Your daily limit, higher ceiling is 450. So, If I don't lose anything, and if I'm making every close to yeah. then we go 1500 before 7 days. Done. Yeah, but they will not. So on the 7th day, so if you take 250 times 6 or 7, you're done. But they will not pass you. You need to trade full 7 days. So that's all. So on the last day, maybe you make $40 and get out. That's okay, no problem. Or $10 or $20, that's fine. Yeah. So make 15, don't lose 15, close your trade 430. Minimum 7 days. But if you go 32 days, that's 2 months almost, right? That so you should finish your exam within yes. नहीं ये आपका evaluation है, ये आपका test exam. इसके बाद आप चले जाते हो real. Sorry. Doesn't matter. Like they're called trading days. Like today, you don't have to trade. It doesn't matter. You don't have to do consecutive trading. You can take as much. Yes. If we are losing 1 day, that is not considerable for the trade. No, you that still counts as a trading day. If you lost $50, your day is counted. No problem. No. That's on round 2. Round 2 is more strict. So this is where you gonna do this On Ninja. on a Ninja evaluation? Yeah, evaluation. Yeah. So once you're ready, that okay, I have most people I ask at least do practice for a week. If you're consistently understanding what a mid band is, what an area is, what a divergence is, you can read the chart and go in, you're okay, right? So it's just you gotta get to the Round is not evaluation, just So- target that you have to make 150 to go. No, that's for round 2. Round 2 means PA. You should make $150 minimum in order to get your. Less, add it to the next day. Correct. So it just doesn't get counted towards your trading day. Yes. The Bullax is there, Tradeaway is there. There's lots of options for you. We put everybody through Legends for one thing and one reason only. All of you get excited and you want to trade now with your own money. I just ask in between, yes, nobody's stopping you. If you have 5,000, 10,000, 100,000, million, I don't care. But sir, let's go right click and refresh. Right click and reload Ninja script. It will fix it. So before let's say you come into this industry and say, you know what, I have $5,000, I'll experiment. I have 10,000, 100,000. No, until you can prove me a discipline. Because how you treat this money is how you will treat your money. Okay, demo doesn't feel real, right? All right, I'm going in or out. Sim has no emotions. This, I got a message today. Somebody lost a PA on Legends. It's on this whole volatility, didn't have a stop loss. It's not the money that you lost. How much is it? Okay, the account got drained $1,500, but it's the time, right? What I'm trying to say is here, your risk is $33, but you're given a capital of $1,500. So treat it like $1,500 because this is how they will give you the capital, the next one, right? And that's no.
All right, it's coming down again fast and hard. So let's see. One more time into that zone. $34. So this is how. Any more questions on legends or? Second round, like you still get paid, right? Even if it's seen, but you still get. No. Round 2 is a real round. There's no sim. It's actually an account. But I was reading, everything is still the same. What they call it is they don't connect it to a live brokerage. That's after round 3. So this is how. So this is all, you're not getting any money also, or you just? No, round 1 you're not. Round 2 you are. You are getting real money. Yeah, this round to show them you can trade. Right? Can I do EA on 50? Sorry? Can I do EA on 50 account? Yeah, but you need to make 3,000. It's slightly different. 3 or 2? I think 3,000 and then your drawdown is 2,500, something like that. Problem with the Drawdown, yes. That's just the way how real money works, man. हाँ जी हाँ जी देख लें ये है कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है कि कितने पॉइंट पे ऑप्टिमल स्टॉप लॉस होता है जिस तरह एरिया का स्टॉप लॉस 5 पॉइंट है तकरीबन आप नीचे आज देखें S1 आई वो गिरती चली गई S1 पे रुकी नहीं S2 आई वहां से भी तो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा तो देखें अगर 100 दिन चली है एक दिन ऐसा आएगा स्टॉप लॉस लगाना है बेशक मिड बैंड का स्टॉप लॉस है डाइवर्जन का स्टॉप लॉस है एरिया का स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेड नहीं कर रहे हाँ आपके जाके उधर उसके अंदर नहीं डैनियल के लेक्चर्स की वीडियो है यस नीचे लिखा है सुपर एरियाज so now S2 became your resistance S1 S2 जो है उनकी जो सेशन वीडियो थी correct That's why we are still a little confused. We can come again on Saturday? yeah you can take as many time the classes but its lectures are recorded like 1 2 3 4 so you can he for 18 years he goes over it's just problem is if you're not if you want video 3 and you gotta then wait for another Saturday to come so might as well go watch the video 3 there right it's better that way नहीं ਉਹ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ 1500 ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀ ਡੇ Sorry? 1510 S&P. Everybody has the same network and same trading. The candles colors are different. Some of them have yellow candles. No, it's just the way how fast the computer can update your colors. I'm just watching background color. Yes. It's just the way the processing for the RAM to go in and paint the candle, it's different. So don't worry about it.
क्या जी गेम ओवर? needed 4 runs. उसको 12 count नहीं नहीं, India wins. Okay. So 2 points for New Zealand, 2 for India. Now the final game would be exciting for New Zealand and India. That would be. दो ही प्लेयर्स ने कर दिया. आपने डिलीट कर दिए. अब बंद करें, सेव, फिर उसको निकालें. भी कर दिया ना यार अब आप जाएं अंदर, वो करके देंगे. हाँ, क्योंकि मैं आपके चार्ट की एक्सेस नहीं है, वो करेंगे. हाँ हाँ, क्यों डिलीट क्यों कर दी? नहीं नहीं, वो लाइट डिफरेंट था, रिमूव तो नहीं करने थे, और अगर गलती से हो गए सेव नहीं करना था, वो आपके लिए कर देते हैं. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. इतनी मेरे में भी हिम्मत नहीं कि उनसे जाके था इसके ना से व्हाई डिड यू डू. So be ready. So just telling you. No, it's okay. I know. Don't worry. Just say accidentally deleted. It's okay. No. When the market is completely dead, then you go bottom of the bar, top of the bar. But today, under no circumstances, it's slow. It is actually giving you trends to go up and down. That is when the at night, maybe you go bottom of the bar, but in color. So if it's magenta, you're gonna sell from the top of the bar. If it's green, then you're gonna buy bottom of the bar. ये अच्छा है, इन्होंने भी आज 250 निकाल ली. I'm happy with the mid band. Irfan bhai, that's good. Thank you, sir. Take care. Okay जी, take care. Hopefully your day was okay. Hopefully day ठीक था क्या आपका? रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं $50-100 का ये जो हम करते हैं मैंने जो $1 $2 का क्या मतलब है
माइक्रो होता है फिर वो छोटा होता है, $5 वाला। देखिए 50 का है ना, कि अगर एक ES जब मूव करेगा तो वो मूव करेगा। $1 ES में मूव होता है तो वो होता है ऑलमोस्ट $50, पूरा 50 ऑलमोस्ट क्या है। लेकिन MES में ये ट्रेड बनता है आपका $5 का। तो जो छोटा अकाउंट होता है, छोटा अकाउंट, उसमें आप माइक्रो करते हैं। हाँ हाँ, उसमें तो वो फिर, लेकिन जब आपका रियल वाला अकाउंट आ जाएगा फिर आपने माइक्रो करना है, मीनिंग राउंड 2 क्लियर हो जाए ना, क्योंकि राउंड 1 में आपके पास स्ट्रेस है, मैंने कितने करने। राउंड 2 में तो कोई स्ट्रेस नहीं है ना कि कितना टाइम लगे। टाइम आप जितना इन्फिनिट ले सकते हो, सिर्फ उस नहीं पैसा बनता है, लेकिन कई लोग अपना रिस्क कम रखते हैं और रिवार्ड भी कम है। प्रैक्टिस करने के लिए वो फिर माइक्रो में जाते हैं। मिड बैंड ही है, सब कुछ सेम है। हाँ हाँ, वो सिर्फ $5 और $10 नहीं नहीं, आधी है, $3 पर। Yeah, market is down, gold is up. Let's see, gold किधर चला गया जी? Let's see, this is touching any area? Not yet. मैं लगाता हूँ, वापस चली गई S2 के अंदर। आई मीन आपकी Nasdaq S1 की तरफ जा रही है। S2 touched, came down, divergence on 30-20.
Last time it came like this was on February 12th. This huge candle. All right, somebody asked me FTMO. Let me give you FTMO buy. So we're waiting for price to get to 240 lower. टेक प्रॉफिट में सेल नहीं है, सेल तो खत्म हो गई। नहीं 50% ऑफ है। वो सेल तो कभी भी नहीं थी, वो उन्होंने डेली लॉस लिमिट निकाली है। ट्रेड करने जाओगे तो जीरो।
Try to get 5 positive points. Excuse me. Sorry. Going to superareas.com level should be used on which chart? 30-minute to 60-minute. Make a new chart, go to new chart, and then add the indicator of super areas, and then this is the best way to plot them. That's what I prefer. Because I have 30 minutes. That's fine too. That's fine. Or on a 15, 10, 30, 20. That's fine too. Because then it gives you a closer zoom in. Okay. This midband worked, guys. Nothing was wrong. Both lower low, both magenta, both coming from large triggers are good. So your prediction of that chances are just if Nasdaq goes below S2, you will have this one go towards S3 as well.
give 1.25 points. I don't know. I think 4 mid bands so far total.
All right, question, color change on 1510, still mid-band valid? No, it's a 3020 mid-band now. Okay, so I have been asked for a few guys to explain FTMO. So another company that we do, I think I have it all saved up, so I'll make it easier. NQ. So superareas.com/ if you go on superareas.com/sheet, SHEET, and it will take you to this Google sheet that will explain FTMO in full detail. So let me pick FTMO at the bottom. Do I have FTMO? Yes. Let me double check. I did it at superareas.com. And under the FTMO banner, I have made a Google sheet for all FTMO accounts. All right, so FTMO breakdown quickly. It's another funded company that does not deal with futures, but deals with something called CFDs. So contract for difference. So some users like to hold a position at 5 o'clock, meaning if they enter a trade and the time is coming, so this company will let you hold it. They have 5 account sizes, 10,000, 25,000, 50,000, 100, 200,000. I have cleared the 200,000. I'm clearing my second one. So and then I will merge it together to make, they do allow $400,000 maximum. So you have to pay one time. There's no monthly fee like that. So एक दफा उसको hit करेंगे, sorry, light को. Perfect, एक बस, good. So you don't need to pay monthly. You can trade on your phone. This does not connect to Ninja. This is for experienced users who are trading areas or bands. So the best chart to trade this is the 60-minute, 240-minute. So whenever you're doing CFDs, 3 charts to watch for: 60, 240, and 1440. If you want to short, look at the upper band. If you want to go long, look at the lower band. So 60, 240, and 1440. These are position trading. You're not trading every day. You're trading maybe once a week, once a month, depending on how, whenever. So right now, I'm waiting for the price to go to 240 lower band. Then I will decide to buy. So that's not a trade you take every day. You just have an account sitting. So if you buy the 10,000, cost is $100, $280, $400, $600, $1,200. It has 2 stages: EA, PA, and payout.
2 stages. So first stage, what's the goal? You have to make 10%. If you buy the 10,000, you have to make 1,000. If you buy the 25,000, 2,500. But don't expect this to be done anytime soon. They are far, like sometimes I would trade this once a week. It's not something that it's like trading stocks or trading options or trading. This is not day trading. Yes, today happened to be, I caught 60-minute bottom and I just took the 30 lots and entered and just quick in and out. But I'm waiting for a bit of a longer position at the lower of 240. Everybody has that chart, they can watch it. So what's the daily loss limit? Your threshold cannot go below these values. So 5%, and you cannot lose maximum 10% of your account. 5%, 10% is basically, and once you clear round 1 or round 2, that's how you finish, go into a daily payout or a weekly payout with FTMO. So you can keep this account running for 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, it's up to you. Once you get to round number 3, so let me give you some benefits. You can hold your trade overnight. Anything you earn, unlike Apex or Per Dia, it adds up from day 1. So it's called a static drawdown. So let's say today you made $200 now, and your threshold was 1,000. Now your threshold has become 1,200. So any money you add into your account does give you the benefit that keeps trailing up. So your principal becomes bigger and bigger and bigger, right? So you can trade the news. I checked they don't care about news or bots or anything. And maximum loss. So this meaning कि पहले 10% था ना, तो आपने 200 बनाया तो 200 भी ऐड हो गया. So maximum loss is added. हाँ जी. ठीक है, आपके पास अगले दिन फिर भी 500 का गुंजाइश है, तो आपके पास आप एक वर्स्ट अकाउंट 2 दिन में उड़ा सकते हो. पहले दिन 500 उड़ाया, चलो 499 उड़ाया, 500 उड़ाया, तो अपने अकाउंट वो खत्म करेंगे. ठीक है, आप देखें ना, आप पे कितना कर रहे हैं, सिर्फ $100, और आपको बफर कितना मिल रहा है, $500 का, तो 4 times मोर मिल रहा है ना. तो आपकी इन्वेस्टमेंट है 100, उन्होंने आपको दिया 1000, तो 90% उन्होंने आपको फेवर दी हुई है, लेवरेज दी हुई है. Every funded company, I don't care, Bullnox, majority of you guys will lose an account and lose time, not money, time. It's the time that, because this is, imagine I didn't have a stop loss. Once again, accounts are gone in a blink of an eye. It's the stop loss that saves you. Why people who have PA accounts, why they don't choose MES? Because sometimes they are so confident that 1,500 account is not big enough. I keep screaming everywhere. You know, I made how much I make on my Apex today? $63. They have a limit of $50. You have to make $50. $63 and I'm done. Because I say anything above 50, but I have 20 PAs. $50 in every. Now I just showed this morning. You know the account I had, like the 415? How much I made in that? $100. So tomorrow, like tonight, actually it would be tomorrow, the day after, I can request $114 from that account. So micros are the power. Anybody that we are discussing on WhatsApp, For example, in ES, yes, you would do MES. sorry, I'm legend, like I'm doing EA. यार EA में तो आपको जाना है. EA में तो आप मिनी करें क्योंकि 30 days में फिनिश करना है. आप नहीं कर पाएंगे. Like if we make a target for achieving 2 months rather than 1 month. लेकिन यार फिर भी महंगा पड़ जाता है ना. पहले आप 33 देंगे, फिर 33 देंगे, तो MES, मैं कह रहा हूँ ES तो आप एग्रेसिवली निकले ना 30 days में यार. तो वरना आपको पहला अच्छा देखें, एक क्वेश्चन क्या देखिए, उन्होंने ES कर रहे हैं ना, 2 ट्रेड डाले आज. मेरे ख्याल है मैंने इरफान भाई का स्नीक पिक किया 250 प्लस में, तो कुछ ठीक किया है ना, तो इसका मतलब है कि प्लस में आया. नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा हुआ है कि ये नहीं है कि आपने लॉस पे, अगर आपका एक लॉस हुआ
आपका डेली की लॉस लिमिट है ना, वो आपको मैंने क्या किया, बस $300 है, आपका 300 लॉस हो गया है और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वॉक अवे कर दें। कि अगर आपने पहले ही ट्रेड डाला 300 का लॉस ले लिया तो ठीक है, आज इसका मतलब है कि मैंने 300, 600, 800, 1200 करके अकाउंट थोड़ी उड़ाना है। तो वो भी तो रूल फॉलो करें ना कि कितने, जिस तरह प्रॉफिट के बाद उठना है तो लॉस के बाद भी तो उठना है। तो इनका ये, somebody asked me how to do this. Yes, so EAs you can go a bit aggressive. Like bull logs of EAs, I did even 2 lots because you know how much is that account? $16, right? And I don't want to wait another month to do a small EA. So round 1 you can go aggressive, but the moment you have master, there's no stress over it, right? So what is the goal for stage 1? 10%. Goal for stage 2, then you have to make 5%. Any questions on this FTMO? If, the full sheet is explained right there on, if you go on the superareas.com at the bottom, there's a sheet written link there that tells you fully about FTMO. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गई। ठीक है, 10 लॉट लाए ना, हाँ हाँ, ठीक है, बढ़ गए, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, नहीं वो निकल जाएगा ना, डिपेंड करता है कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ अगर निकल गया तो फिर अगर टीपी लगा से तो निकल जाएगा 6:15 तक। हाँ हाँ हाँ, वो कवर कर जाएगा, यस यस, 100%, 100%। नहीं नहीं, वो बेशक स्टॉप लॉस लगाओ, बेशक लैपटॉप बंद हो, हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन वो जब सुबह उठी तो वो मैंने यहाँ पे लगाया था तो वो नीचे भी आ गया, तो मैंने वो शॉर्ट किया था, उसका जब ऊपर जा रहा था बंद ही नहीं हुआ, जबकि मैंने स्टॉप एक प्रॉफिट यहाँ तक खत्म हो गया। वो हो चुका था बंद, क्योंकि स्लीप मोड में जाके, तो मैंने वहीं पर सब क्लिक कर दिया, वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बट उसने ये ही नहीं टेक प्रॉफिट, आई थिंक स्लीप मोड में काम नहीं मैं जनरली हो जाता है, स्लीप मोड होता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं वो ऐसा ही है, लेकिन आपका ऑर्डर पीछे चल रहा है, ऑर्डर डिस्क उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्लीप मोड से, निंजा बंद होता है, ऑर्डर्स नहीं बंद होते। नहीं हाँ, लेकिन कई दफा आपने देखा यार कोई गलती हो गई है, पता नहीं मेरा ऑर्डर ही नहीं पिक हुआ, आपने कहाँ सेल लगाया था? अच्छा अच्छा अच्छा, लगाया था रात को, आपने बताया था ये लगाया था तो डिटेल में और तो प्रॉफिट बना, लेकिन जो टेक प्रॉफिट था वो हिट नहीं हुआ। नहीं कंप्यूटर स्लीप मोड का कोई ताल्लुक नहीं है सर। ये नहीं, ये कह रही 2 पॉइंट के बाद बंद हो जाना चाहिए था। All right, another. शाम को तो एरियाज और मिड बैंड बहुत स्लो हो जाता है आपका, sorry, and आपका name Farah है ना, right? You worked okay today? So good. Green day, right? That's good. That's what's sorry sir, वो लाइट ऑन कर दें। मैं शुक्र है आज कोई मार्केट मूव हुई है, वरना तो सांस सूख जाती थी। वो बस 10 बजे हैं और वो फ्री फॉल हो गई। यस,
हाँ जी, हाँ जी। Swing the C trader. आज का नीचे कितना गया 951 और हमारा एरिया था 950। ये ज्यादती हो गए क्योंकि वो कई दफा नैस्डैक जो है ना, वो जिस दिन आप थोड़ा सा पहले जंप कर दो 10 पॉइंट, वो वहां से 40 पे जाएगी और जिस दिन आप कहो कि नहीं यार आज मैंने एरिया पे बैठना है, वो 951 से चली गई। एनीवे वो चलती गाड़ी में तो मैंने एफटीओ में डाल दिया। मैं कहा यार होल्ड ही कर लेंगे ज्यादा से। आज एफटीएमओ लॉन्ग ट्रेड था। किधर गया जी एफटीएमओ सी ट्रेडर? पोजीशन तो कोई नहीं ओपन। हिस्ट्री एफटीएमओ दी डील नहीं आती सर आज आज है 20 तारीख। The trader weight thing, the password is very weird. Can I change it? Difficult. No, it's रीजन है कि वो बहुत ना स्पेसिफिक मांगते हैं। आप उसको ऐसे करें, आसान तरीका, ईमेल में जाएं, अपने आप को ईमेल कर दें, फिर जब ईमेल फोन पे आ जाए उसको कॉपी पेस्ट कर लें। नहीं वो तो टाइप फिर भी करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ ईमेल करते हैं वहाँ ट्रेडरवेट की वेबसाइट पे जाके और फिर कॉपी पेस्ट। यस नहीं वो चेंज, क्योंकि उन्होंने आपको असाइन करना होता है। बॉटम के साथ अटैच नहीं होता, वो मैनुअल होता है। हाँ एक ही करके मैनुअल जाना पड़ता है।
लेकिन आपका जो क्वेश्चन है मुझे रियलाइज हुआ, उसको 5 कर दें, 5 माइक्रो। अगर आपने उसको फिर भी 30-20 दिन में हो सकता है। देखें, आप कहते हैं कि मुझे मिनी से जरा फील है कि ज्यादा लॉस है, राइट? 5 माइक्रो कर दें, वो फिर भी आपका 1 मंथ में हो सकता है। $100 का डेली प्रॉफिट है ना, 15 दोनों में भी हो जाएगा। तो 5 माइक्रो ले आए। 5 माइक्रो का ये मतलब है कि 1 पॉइंट $25 का होगा, 50 का नहीं होगा। कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं, वो उसको रेदर देन के 1 मिनी करें, 5 माइक्रो कर लेते हैं। वो देखिए, प्रॉफिट भी उतना और लॉस भी कम है, राइट? सो तो अब आप इसकी फीलिंग ये है कि आपका अकाउंट का साइज 3000 का हो गया। टेक्निकली तो वही है। तो पीए में तो जाए माइक्रो में, वो तो कसम खाई हो है ना, राइट? तो क्योंकि उसमें इतनी जान नहीं है। तो मैं 2 माइक्रो से स्टार्ट करता हूँ, और अगर बहुत वर्स्ट के स्टेज हो जाए 5 माइक्रो तक मैक्सिमम रखा है, क्योंकि वरना फिर जो है काम खराब हो जाता है। आज तो चलो फिर उसने रिट्रेस दे दी, वो एक दिन तो रिट्रेस ही नहीं आ रही थी, वो हर एक झटके के बाद वापस जा रहा था। वैसे लेजेंड के बाद, जो लेजेंड से एक आध पेयर ले जाए फिर टेक प्रॉफिट में जाए। ये आज मुझे इसकी पावर पता लग रही है, क्योंकि वो उस्मा जी और रात में कितने, क्योंकि आज सुबह मैंने दिखाया था ना, उसमें $4 बने हुए थे, तो आज उसमें मैंने 100 डाला है मैं अपने टेक प्रॉफिट के अकाउंट में ना। पहले मैंने ये किया, फिर पीए किया, और पीए के 1500 के बाद आज उसमें 100 डाला है। अब कल शाम को, बल्कि कल सुबह को 6 के बाद वहां लिखा आ जाएगा विदड्रॉ $100 इफ यू लाइक। 1500। अब मेरा थ्रेश होल्ड भी बढ़ रहा है, राइट? सो that's amazing, because my target is 5 accounts. नहीं नहीं सर, $50 every day, 5 accounts, $250 सीधा सीधा आता है, राइट? और अब ये ना कहिएगा 50 नहीं बनते। 2 MNQ से 50 तो आंखें बंद करके हो जाते, 25 पॉइंट मूव होनी होती है। नहीं, लेकिन MNQ पे भी एरिया से करें ना। देखिए, मैंने आपसे कहा S1 नहीं चली, मेरे साथ मिस कैलकुलेशन पर मैंने S2 का गैप नहीं देखा। S1 और S2 का गैप इतना छोटा था नैस्डैक में कि सिर्फ 40 पॉइंट था। S2 पे वो रुकी, लेकिन पूरी रिट्रेस नहीं आई। लेकिन जो S3 पे तो उसने बकायदा जो है ना, हाँ, तो आपका हो गया, और अभी भी ऑड आवर्स में है, राइट? और ये अगर 5 टेक प्रॉफिट हो, चले आप ऐसा करें, मैं कई दफा ना उसको कॉपियर नहीं जोड़ता, मैं कहता हूँ सारे इकट्ठे ना करें, एक में 50 डाल दिए, इसमें फिर 50 डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसमें 50 डाल दिए, और पूरा। हाँ, यस, गुड। अब ये R1 पे जाएगी, फिर बेचेंगे। R1 पे जाएगी, अगर जाएगी तो ये क्वेश्चन है कि today you guys were okay, like green day, right? So are you getting close to your exits of 26,500? Okay. What went wrong in those? Okay. Trade of it. Yes. It was too late. So before you open Ninja, open trade of it. That's the key. Yeah. But you're recovering it back up slightly, right? Let's look at trade of it.
ये करने हैं सारे माइक्रो I think done. Yeah, because your drawdown has gone below zero. You see, so look at the drawdown. It's in bracket. You can't trade this account anymore. So you've lost 1,500. That account. The total loss was 15 and it's gone now. Oh, but look at your drawdown. In trade of it, look at the drawdown. That's the important number. Nothing. Either cancel this account and reset it again. Log into Legends website. ये मेरी बात है अगर अपने प्रॉपर्टी के अंदर एक 4 ट्रिगर करने के बाद ब्रेक इवन करता है जैसे ही चार्ट करते हैं ब्रेक इवन करता है फिर क्या अरे यार आप भी लगा रहे हैं ना मतलब चार्ट में ट्राई करता हूँ अभी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बिल्कुल सिस्टम ऑफ कर दिया. अरे भाई Yeah, go under subscriptions, account subscriptions. 50 सेंट का एक ट्रेड है वो तो $1 देने में क्या प्रॉब्लम 50 सेंट तक ले लेगा मैं एक प्रॉब्लम की बात करता हूँ All right, see you guys. But which company lost the value today? Tesla went $6 down, Google down, Amazon down, Meta down. So really these 4 or 5 companies took everything down. We have to cancel the account, right? Yeah, cancel account, and it will say pending cancel. Once we can price down these stocks. Yeah, but It's already like what is follow like first the stocks. stock prices goes down. Yes, Then it will- correct. It fixes the futures price, but it happens way too fast for us So we to. can- I launch So that's it, just wait for them to apply. I 93 नहीं यार ऐसा मत बोलो मेरा दिल मत बोलो वैल्यू ऑफ बाई लॉन्च हो गया हाँ मैंने तो लॉन्च किया 3.14
नहीं अरे value of buy crypto करो ना यार 22% by 7 pi is equal to 22 divided by 7 so 3.14 something value आ जाती है around 81 cents it fell down या किसका है ये ट्रेडर मोबाइल ऐप में भी दिखाना चाहिए Sorry? अकाउंट इट शुड शो राइट Yeah, इसमें नहीं लिखा है आपने लॉगिन किया ट्रेड मैंने किया ये बट कंप्यूटर पे तो है ये ये आ रहा है ना सर ट्रेड अकाउंट है सिर्फ आपने इसका लॉग आउट किया ट्रेड लेजेंड्स ट्रेड मेन अकाउंट में गया तो नो अकाउंट दिखा रहा है लेट्स सी लॉग आउट साइन इन एक दफा फिर साइन कीजिएगा लेजेंड्स के यूजर तो you're distant to you still have $937 yeah so it's good your account is okay तो बायोमेट्रिक तो कैंसिल करना है बायोमेट्रिक yeah press okay yeah and simulation Oh yeah. Now it's yes So should I go with the new one or should it's up to you do you feel it's demo or whenever you feel confident then attempt the exam right this would be the only way you will never go into live money until you clear at least this stage because again the risk is so small 33 to $50 but the practice is for the real 1500 right when it makes a reverse on the go against the reversal or in the direction of the longer move. That's why वो document की तो ये मिडवाइंड पे लगाया हुआ है आएगा देखो प्रॉब्लम ये है इसका मिडवाइंड जो है वो लॉन्ग टर्म में ये वन तरफ जा रहा है नहीं आज आ रहा है hopefully
यहाँ से कहीं तो शॉर्ट करना बनता है लेकिन नहीं। एक सेकंड, शॉर्ट नहीं, एरिया के अंदर आ जाए जी। एक सेकंड, शॉर्ट नहीं नहीं, R1 पर अगर एक सेकंड मैं अभी बता देता हूँ आपको। मैं लॉग आउट हूँ क्योंकि मैं किसी ट्रेड में नहीं था। हाँ, एक सेकंड जी, इसको जाने दें S1 की तरफ। S1 की तरफ जाएगी तो वहां से सेल करें। इस वक्त नैस्डैक तो तकरीबन ओवर हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अब आप $100 जाके लूज कर लें। नहीं नहीं नहीं, ये बताएं रियलाइज कितना शो कर रहा है, 550 या साढ़े कितना? मुझे एनी डेस्क हैं। नहीं नहीं, मुझे कमीशन काट कूट के मैंने ट्रेडोवेट के अंदर लॉग इन करके देखना। अगर तो 6 बजे से पहले दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका अगर आपने 550 बनाया है ना, तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि आपने करना है 550 डिवाइडेड बाय 30%, तो आपका टारगेट 1800 पे जाएगा। ठीक है, अब या तो एक ऑप्शन है कि आप या अपना टारगेट 1800 पे ले जाएं, इसको ना छेड़ें, अपना लॉस ना लें और टारगेट 1833 पे ले जाएं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये नहीं नहीं, फायदा दोनों साइडों पे नहीं है। एक है कि आपको अपना एग्जाम पास करने के लिए ना 1850 बना लें, क्योंकि आपने 550 का डे लगा लिया है।
हाँ ठीक है, मुझे दिखा एनी डेस्क। अच्छा सॉरी, उस वक्त मैं उसका ट्रेड में था तो मुझे दे एनी डेस्क। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि कल 6 के बाद ट्रेड किया है? या नहीं, क्योंकि कल 6 के बाद जो ट्रेड है वो आज की डे में काउंट होगा। एनी डेस्क है तो कौन सा ट्रेड आज किया? एरिया का? नहीं, लेकिन S3 पे डाला है, S2 पे, S1 पे कैसे? हाँ हाँ 2 से एक्सपेक्टेड लो पे आई ना। हाँ नहीं, S2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, लेकिन रिकवरी S3 ने करवा दी। जी हाँ नो चैलेंज एक्सेप्ट करें। अच्छा, मैं इसका कभी भी आपने देखना ना कि आपने किधर बनाया है, राइट? तो ये गया मैं इधर, ये गया हूँ। आप जाएं, ट्रेडोवेट की वेबसाइट खोली हुई है, ट्रेडोवेट आपने ये खोली हुई है, इसको ये देखिए, आपने 535 बनाया जी। तो मैंने सर ये देखना है कि आपने एक सेकंड, आप हमने ये मंडे को खोला था, नहीं ट्यूसडे को आपने पहला ट्रेड किया, ट्यूसडे को आपने बनाए $6, ठीक है, टेस्टिंग में। कल बनाए आपने 19 तारीख को आपने बनाए, ये थोड़ा सा नेगेटिव गया, क्या हुआ? हाँ एक सेकंड, आपका थ्रेशोल्ड तो पूरा है। आज आपने सर बनाए हैं $915 में मेरे भाईजान। अब क्योंकि आप तो लेकिन नीचे से भी तो आए हैं ना आप, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद नया डे हो जाता है ना। अभी आप लूज ना करें इतना, आपका फिर थ्रेशोल्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि अब आपका टारगेट मेरे भाई चला गया है 915 डिवाइडेड बाय 30%। आपका 3000 का टारगेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि आपने ज्यादा बनाया। ये देखिए ना, वो बांध के रखते हैं। आपका अगर कल शाम का ट्रेड हो गया था तो आपने एक्स्ट्रा ट्रेड डाले। हाँ तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आप मैक्सिमम पता कितना लूज कीजिएगा? एक सेकंड में बता रहा हूँ, क्योंकि थ्रेशोल्ड भी ना खराब हो। आपके पास कितने पैसे पड़े हैं आपके पास? अगर आप 500 लूज करेंगे फिर ठीक है, हाँ 500 लूज, लेकिन फिर आपका जो बैलेंस आ जाएगा ना, अगर यहाँ से 500 लूज किया तो आप 25,300 पे आ जाएंगे, ठीक है? तो या आप अपना टारगेट बढ़वा लें या आपको इसको लूज कर लें। अच्छा, जब ये डिस्टेंट ड्रा डाउन रह जाए ना 1500 पे, ठीक है, फिर रुक जाइएगा। हाँ 500 लूज कर सकते। हाँ वो लूज करेंगे तो आप उसके ब्रैकेट के अंदर आएंगे। आप भी तो बगैर किसी सोचे समझे ट्रेड डाली जा रहे हैं ना, $900 बना लिया। चलो नहीं 6 बजे के बाद जितने ट्रेड डाले हैं वो आज में काउंट हुए। ये है नो प्रॉब्लम। और 500 लूज करना से 1500 ना लूज कर लेना प्लीज, ठीक है? ओके, देखना तुम 1500 तो 900 तो 1500 ला जाओगे, ठीक है? करो जी, ओके।
या उल्टा ऐसा हुआ, क्योंकि टारगेट बढ़ा लिया ना उन्होंने, 1000 बना लिया तो उन्होंने टारगेट आपका ले गया ऊपर ऑल द वे, फिर 22,000 के ऊपर ले आए। देखते हैं जी S1 रेजिस्टेंस बनेगी, एब्सोल्युटली। टेक प्रॉफिट का नया जब तो उसमें क्या है, उसका क्या देखिए 50 वाला लिया, 3000 बनाने आपने, नहीं डेली नहीं, पहले ये 3000 बनाने। आप लूज कितने कर सकते हैं? $2500। ठीक, नंबर 1 ये आपको मिला होगा $85, ठीक है। 5 दिन से पहले नहीं बनाने, ठीक है, 5 दिन से पहले नहीं बनाना। एक दिन में 1500 से ज्यादा बनाना है, तो ये तीसरा रूल है। Order filled. और नहीं मैं किसी का एनी डेस्क कर रहे हैं ना, वो अशरफ भाई 915 बना के बैठे हुए हैं। अब उन्होंने चीज मिल गई है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कल शामी 6 बजे वो समझे, वो 12 तो पहले दा रूल समझे, उन 6 बजे वाले वो लेजेंड ने सारे इधर पा देते, वरना 3000 से टारगेट चला जाएगा ना। अच्छा गोल्ड में याद है वो लूज भी नहीं हो रहे थे उस दिन, एक दिन में 1500। हाँ बस ये 3 रूल है। 3000 बनाना है, 30 दिन है आपके पास, तो 30 डेज के अंदर तो 3000 बनाना है, 2500 लूज नहीं करना, और क्या है जी 4:30 पे बंद करना है 5 दिन से पहले नहीं। ये अगर पास हो जाता है, पीए का रूल आसान है, वो कहते हैं एक दिन में बना दो बेशक, हाँ, और पीए में 2500 सॉरी 26 आपका 2600 बना लेंगे ना जिस वक्त, उससे ऊपर सारे आपके हैं। 2600 के बाद आपके, और ऑलवेज फिर वो 2600 के बाद नहीं 26 मैं आपको आज का बताता हूँ। मैंने अपना ये कंप्लीट किया, ठीक है, मैंने लिया 25,000 वाला, मैंने 50 वाला ना लिया, मेरे पास 1500 का ये था और 1500 का लॉस था, ठीक है। मैंने कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, फिर मैं प्रो में चला गया, इसका नाम कंबाइन है, कंबाइन के बाद प्रो है, चला गया, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से मेरा वो क्या लगा आपका, अल्लाह भला करे, आज कल मेरे पास जो पीए था मैंने 15 दिन लगा के 100 200 102 माइनस करके पूरा 1500 बना लिया। अब मैं जितने पैसे इससे ऊपर बनाऊंगा मैं एवरी डे विड्रॉ कर सकता हूँ, बेशक मैं 100 बनाऊं या 1000 बनाऊं। 3000 बनाने के बाद कितने हमारे नहीं पहले राउंड में नहीं, दूसरे राउंड में पीए में 2600 है, बनाने के बाद जितने बनेंगे वो शाम की शाम ले लें। आज मैंने कल रात में आया था तो मेरे पास $4 बने हुए थे, 1504 थे। आज मैं उस अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने बनाए हुए हैं ये, एक सेकंड, मैं पीएस करता हूँ माइक्रोस में। देखिए अगर आप देखें मेरे 2 माइक्रो लगे हुए हैं, 2, मैं तो पीएस को डालता ही नहीं है क्योंकि अकाउंट ही छोटा सा है, बेचारा मर जाएगा अगर उसमें मैं मिनी डाल दिया। कितना मैंने शो करा, $50, तो इतना कोई बहुत मसला नहीं है मेरे लिए, राइट। तो नंबर 2 ये मेरा है अकाउंट टेक प्रॉफिट का, मैं सिर्फ आपको उसके एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर लिखा होगा 26,000, सॉरी मैं एपेक्स को डिस्कनेक्ट करता हूँ, एपेक्स भी मेरे 20 कनेक्टेड हैं और एपेक्स को बंद करता हूँ तो खाली टेक प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए 26,000, ये देखें 26,612 बना हुआ है। वो ये कह रहे हैं 26,500 के ऊपर जितना है मेरा है, ठीक है।
अब ये वाला अकाउंट मैंने कितने का बाय किया था? $75। मैंने उसकी दूसरी फीस की 130, मैंने $200 पीए के लिए पीए के। अब उस 200 में से मैं ऑलरेडी 100 आज ले लूं तो मेरा अकाउंट भी ठीक है, सब कुछ सही है। तो अब मैं इस अकाउंट का मेरा एक टारगेट है, ये सारे अगर आप देखें कि कुछ चले गए 26,400 पे, कुछ 500 पे, कुछ 300 पे, कुछ 200 पे। जब ये सारे 26,500 पे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ को मैंने कॉपियर कर रहा हूँ, कुछ को नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इसमें मेरा टारगेट क्या है? उसका $50 डाल। 2 ईयर्स से यार इतना बुरा माइक्रो है ना, तो अगर $50 एक अकाउंट में होता है तो 5 अकाउंट में मेरे 250 बन गए। एवरी डे का $250 की एक सिर्फ इससे है। फिर मेरे जो हैं, आप एपेक्स देख रहे हैं, एपेक्स के अकाउंट चल रहे हैं 20, ठीक है। अब आप सारे देखें, सारों में हो गया है 26,200। इसको कहाँ लेके जाना है मैंने? 27,000, ठीक है। 27,000 पे जब ये चला गया तो मेरे हर अकाउंट में 500 मिलेगा। 500 टाइम्स 20, $10,000 का ये पे आउट रेडी है। तो जैसे अभी मेरा भी एपेक्स में है ना, अभी वो पहुंच गया मेरा उसमें $200 और बनाने हैं पीए के लिए। आप ईए से पीए के लिए? पीए हो गया है ना, बस नहीं, $200 पीए का पे आउट है ना। तो आपने अपना एपेक्स का पीए है, उसमें कितना बनाया है? अभी 27,000 तो 200 और बनाना। दोस्त नहीं, आपको 50,000 वाला है, तो आप ऑलरेडी पे आउट ले सकती हैं। 8 दिन हो गए। नहीं, वो है हमारा 50,000। हाँ, तो 50,000 की तो लिमिट ही 26,500 $3,000 बनाने थे ना। 26, हाँ ले आए, तो आप $500 तो निकाल लें उसमें से कुछ। तो बात यह है कि जो 25,000 का अकाउंट है उसमें 1 या 2 माइक्रो से काम होता है, क्योंकि वो अकाउंट में साइज नहीं है ना। अब ये होगा, ये जाएंगे जब 27,000 पे, तो मेरे पास 2,000 बन जाएगा, ठीक है। वो मुझे $500 दे सकते हैं। अगर मैं 3,000 बनाऊंगा तो 1,500 देंगे, तो मैंने 500 निकाल लूंगा, ठीक है, 2,000 में। जितना भी वो हाँ, निकाल मैं देखें, मेरे पास 20 अकाउंट है, 500 पर अकाउंट, 10,000 का ये दे बनेगा, राइट। और वो दूसरे वाले वो रेडी हैं। ये कितना आ गया अकाउंट? $32 का वो लॉस है। कोई 2 माइक्रो चल रहे हैं अब, तो हाँ, इसमें ट्रेड भी डाला हुआ है। मुझे ये भी नहीं है मैंने यार ट्रेड डालना है, ट्रेड वो ट्रेड घूम रहा है ना। और माइक्रो नैस्डैक तो घूम फिर के आ ही जाती है, राइट। तो ये एक प्लान के साथ चलना है कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मास्टर हो जाना, कि मेरे अकाउंट में लॉट साइज कितना जाएगा कि मैं उससे ज्यादा ना बढ़ जाए, राइट। नंबर 2, उसके आगे आपको स्टॉप लॉस लगाना आ जाए कि इतने लॉस के बाद मैं निकल रहा हूँ। मोस्टली ऐसे हुए कि जितने मैंने स्टॉप लॉस लगाया ना वो नुकसान में नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अगर आज की तरह होता, मैंने आज S1 पे स्टॉप लॉस लिया, S2 पे लिया, क्योंकि वरना ये अकाउंट वो गिरती चली गई S1 से S2 से, तो यहाँ तो स्टॉप लॉस ले लिए थोड़े थोड़े, S3 से रिकवर करके सारे वापस आ गए, तो जा ग्रीन में रहा हूँ। इमेजिन करें ये 2 स्टॉप लॉस ना लगे होते तो ये तो सारा काम एक ही दिन में खत्म हो जाता। मैंने कितनी मेहनत, 15 दिन पहले और 30 दिन की, पैसे नहीं जाया हो रहे, टाइम जाया हो रहा, राइट। सो जी सर, अब आपने कितने, इसमें ना जाएं, एपेक्स की वेबसाइट पे जाएं। Alright guys, I'm gonna turn off the live stream. See you guys tomorrow. Enjoy. And my recommendation is don't lose money in PA. If you have made it, don't worry. Like, I mean, EA, it's okay. You don't get paid for anything like that. Take care, जी. अच्छा, आप जाएं पहले रिक्वेस्ट पे आउट, वो ऊपर लिखा हुआ।
पहले मुझे सॉरी पीए चार्ट्स दिखा दें। अब आपने ट्रेड किया है 6 दिन, ठीक है, आपने 6 दिन में $2000 बनाए, ठीक है। ये तो पहले आज का ट्रेड हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कितना बनाया है 800 प्लस क्या, ठीक है, नो प्रॉब्लम, गोल्ड में ही उसी तरह नहीं, मैंने ये आज यस नीचे से लॉन्ग किया ना जब एक्सपेक्टेड लो की तरफ, हाँ वो सेल सेल में रही। तो एक सेकंड, फिर आप ट्रेडोवेट की वेबसाइट खोलें, वो इमरजेंसी प्लीज लगा के रखा करें, इन केस का ये अकाउंट निंजा खराब हुआ ना तो ट्रेडोवेट, हाँ ठीक है, यहाँ लॉग इन करें, क्योंकि ये आपकी इमरजेंसी एग्जिट विंडो है। ये पहले मैं आके ट्रेडोवेट खोलता हूँ फिर निंजा खोलता हूँ। अच्छा पहले ये खोल लें। हाँ, क्योंकि अगर इसमें लॉग इन करें, ये लेजेंड नहीं है, सॉरी एपेक्स, हाँ करें, लॉग इन करें, एपेक्स की वेबसाइट पे होगा, ये ऊपर टॉप पे जाए, वो जाए होम पे, डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड, और यहाँ जाएं, ये शो पास करके इसको क्लिक करें। ओह लॉग इन करें, यस, ये मैंने इसलिए आपको सेट करके दिया हुआ है कि एनी गिवन टाइम आपका कोई निंजा बंद हो जाए और आपको पैनिक सिचुएशन हो जाए तो ये आपका लाइव एग्जिट है कि आप इसको फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करें, हाँ नहीं इसके अकाउंट के ऊपर अकाउंट के ऊपर नीचे अकाउंट पे, हाँ राइट क्लिक लिखा है एग्जिट ऑल पोजीशंस, क्लिक करें, क्योंकि वो इंटरनेट चले जाता है ना, इंटरनेट गया, फोन गया, कुछ गया, ये फोन पे भी होना चाहिए, फोन पे भी, क्योंकि कल हमारे घर का इंटरनेट बार जा रहा था ना, तो वो पता ही नहीं चला था। हाँ तो ये फोन पे रखें ना, फोन पे डेटा से ऑन करें तो ठीक है, ये रियल मनी इन्वॉल्व हो रहा है। आप लोग तो इतने पे आउट के करीब चले गए हो, फोन पे ट्रेडोवेट हो, यहाँ पर ट्रेडोवेट हो, ताकि इमरजेंसी में अगर लेस से आप पैनिक में हैं और अब निंजा नहीं, आपने डाउनलोड करना है ट्रेडोवेट की क्या। अब देखिए, आज आपने, मैं सिर्फ देख लूं आपका टोटल पीएनएल कितना था, सिर्फ डॉलर आज आपने बनाया कमीशन के बाद 852, 30% के अंदर है ये। एक सेकंड जी, 50,000 का 30% ना, हाँ नहीं 3,000 का डिवाइडेड बाय 30, ठीक है 2840, सही है, आप उसके अंदर ही हो। किसी दिन इससे ज्यादा तो नहीं बनाए आज, ये हाईएस्ट है ना, नहीं ओके, क्योंकि वो फिर जब उनकी इंक्वायरी आएगी ना कि हमने आपका ट्रेड देखा तो 30%, आपको फिर 6 दिन याद है कौन कौन से दिन ट्रेड किए, ओके, फिर जब ये आपका अकाउंट आज 7वां दिन हो गया, एक दिन और ट्रेड करें, ठीक है, नहीं आज तो कुछ नहीं, तो कल है फ्राइडे, अगर कल नहीं करना मंडे कर लें, तो 2 दिन आप जो है वो और उसको बनाओ, कितना बनाना पड़ेगा, आपने बनाना है 27,791 है ना, तो नहीं 26,000 2700 कर लिया ना, ये 2700 हो गया, तो इसमें लेस से 300 और डालें, चल 200 और डाल दे, 3,000 जब हो जाएगा तो वो आपको उसमें से 1,000 या 500 तो देना, एटलीस्ट जितने पैसे इनको दिए हैं कुछ तो रिकवर करें। नहीं तो हम उसको वैसे नॉर्मल हम पेआउट कितने का ले सकते हैं, 1500 का, अगर हम 3,000 पूरा करेंगे तो। नहीं, आपको करना है 3,000 में 1500 का, 3,000 करेंगे तो 1500 होगा, वो डे 8 में बता देगा मैक्सिमम पे आउट, वेबसाइट उनकी, जब हमें 3,000 से ऊपर हो जाता है। यस, इसमें मतलब 3,000 ही बनाने हैं, उससे ऊपर नहीं नहीं बनाना। बनाए जितना मर्जी है बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रिकमेंडेशन नहीं है, आज ना बनाइएगा। अब आप लूज कितना कर सकती हैं, 2700, ये याद रखिएगा, 2700 इसमें से नहीं टोटल आपके पास जो मार्जिन है ना वो 2500 से स्टार्ट हुआ था ना, अब वो 2700 पे चला गया, क्योंकि आपने पैसे एक्स्ट्रा बनाए हैं ना। अब आप जो पैसे इसमें डालती जाएंगी वो अकाउंट बिल्ड होता जाएगा।
हाँ देखिए, जब वो ब्रिज आएगा ना, हम उसको उस वक्त क्रॉस करेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना अभी है, कुछ बस नहीं। बनाना है ना। हाँ, अभी आप ऐसे बनाए। ये मिड बैंड टच नहीं हुआ उस तरह, इस तरह। मोबाइल में आपने डेडोवेट किया था ना, ट्रेड वेट किया प्लीज। उसमें भी ये सारा होगा।